This meeting is being recorded. So, hello everybody. Welcome back once again to my YouTube channel. And as we have understood in our previous sessions, we have already covered one the basic needs, scope of supply, as well as the charging section. So today what we would be covering is a special scheme, that is a composition levy, which has been provided by the government to whom? To all the small tax practitioners, as well as to the tax practitioners who do not have a wish, do not have a desire to do a lot of compliances under the act. As a person who is studying GST, plus a person who sees their future in GST, everybody would appreciate that there are a lot of compliances which are supposed to be undertaken. What are those? How many are those? That we would see as and when the time comes. But to give you an overall hint about this scheme, I'll tell you only one thing. If it is okay for you to let go of your input tax credits, to let go of your say collection right, you should opt for this scheme. However, this being said, this scheme is quite popular not in the metropolitans but in small regions as well as small towns and sectors. Let us understand what composition scheme is firstly all about. See, there are a lot of taxpayers who are like, we do not want to pay tax at a rate which is as high as 18%. So give us a reduced rate. So first feature of this scheme is that you get a reduced rate of GST. Second feature, obviously, if the rate is less, the government says we don't get our full revenue. So when we don't get our full revenue, we would not be giving you any sort of benefits. Benefits, as we all know, is no input tax credit. So that is ITC would not be permitted. The third thing, reduced compliances. So if Nihal, who is under regular scheme, needs to do compliances for say 12 months, if you are a person under a composition scheme, the amount of compliances that you are supposed to do also reduces. So I've just reduced down the size of the screen so that I also get more space to write and you people also get it clear. So I hope all these three benefits or the three conditions of a composition scheme are clear. So let us now read as to what is section 10, that is composition scheme, all about. Section 10, that is composition levy. The first thing to understand is who can opt for it, and even if you have opted for it, is there any section of the charging section
applicable to you or not applicable. First things first, we had understood that there are two mechanisms, FCM, RCM. If you remember or recall the section, RCM was 9.3 plus 9.4. The government says that even if you are under composition scheme, 9.3 and 9.4 remains applicable. Now, how do I say that the government says this? They have used the words subject to the provisions of section 9.3 and 9.4. That means even if you decide to pay tax under composition scheme, you still are liable if you receive any services that were liable under 9.3. And to give you an example of it, legal services were liable, government services were liable, GTA was liable. So if you receive any GTA services, in order to get your goods transported from a location, say location A, to another location, say location B, in that case, याद रखने का, कंपोजिशन स्कीम में होने के बावजूद आपको रिवर्स चार्ज में अपनी पूरी की पूरी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी. Now, what is the rate of 9394? Whatever may be the rate. It can be 5%, it can be 18%, it can also be 28%. I hope I am clear to you. So who can opt? Obviously, you have to be a registered person whose aggregate turnover, I repeat, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1 crore 50 lakh rupees. So now you have for the first time come across the term aggregate turnover. What does that mean? It is there just after this slide. But first let us complete and conceptualize as to who can opt for it. So you are a registered person. Your aggregate turnover in which year? In preceding financial year. So you do not have to check your turnover of the current year. You have to check your turnover of the preceding financial year. Did not exceed 1 crore 50 lakh rupees. So I will write it down as 1.5 CR. May opt to pay tax. Now the importance of the word may over here is it is not compulsory. It is optional. So there can be a scenario wherein your aggregate turnover is less than 1.5 CR, but you still do not want to get into all this. You say, मैं पूरा टैक्स कलेक्ट करेगा, मैं पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दे दूंगा, मेरे को कोई हेडेक नहीं चाहिए. क्यों? मेरे जेब से तो जा नहीं रहा, मैं कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, मेरा क्या? In lieu of tax payable under section 9(1), which was our charging section, may pay tax at an amount calculated as prescribed under rule 7. Okay. अब वो रूल 7 में क्या क्या रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है और कौन से टाइप के टैक्स पेयर्स प्रिस्क्राइब्ड है वो देखो. फर्स्ट जो पर्सन प्रिस्क्राइब्ड है वो है आपका मैन्युफैक्चरर. कौन है आपका? मैन्युफैक्चरर. उसको क्या बोला? पे टैक्स एट व्हाट रेट? 0.5% of turnover in state. कितना परसेंट? 0.5% of the turnover in state. Now remember, the act that we are studying is the CGST Act, and therefore even 0.5% of SGST is also payable, and hence the total rate of tax is 1% of the turnover in the state. Second, suppliers.
who's making supply. Manufacturer, it was 0.5%. Suppliers who are making schedule 2, so they are talking about restaurant. They are talking about restaurant. रेस्टोरेंट वाले को कितना बोला? 2.5% of turnover in state. 2.5% किसका भरना है आपको? ऑफ टर्नओवर इन स्टेट. अगेन इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? 5%. 5%. थर्ड, एनी अदर सप्लायर, सो इट कैन बी अदर्स. अदर्स के लिए कितना है? अगेन 0.5% इज सेम, बट इट इज ऑफ द taxable turnover. So now you have to also understand that the term aggregate turnover is not just taxable turnover, it will also include things other than taxable turnover. Why? I will give you all the logical reasonings of it. However, we will have to keep this in our mind. I hope that till here everything about composition scheme is clear. Yes, sir. Okay. Now, is the limit of 1.5 CR applicable to the whole of country, or there are certain states who have opted out for a reduced level of turnover as well? The answer to that is yes. So, which are the states who have opted for a reduced level of turnover? They are AP, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, and Uttarakhand. So these 8 states, if you are a dealer, if you are a registered person in any of these 8 states, and if you want to opt for composition scheme, your turnover should be, or rather the threshold for you to stay in the turnover composition scheme is 75 lakhs and not 1.5 crores. So now this brings me to a question which I have for all of you. So there are 2 basic questions that are there. One, it is my first year of operations. Can I opt for composition scheme? It is my first year of operations, and therefore, can I opt for composition scheme? No, because this applies for preceding year. Okay. Okay. So you have given me a correct logic, but an incorrect answer. Understand, if it's your first financial year, the turnover in the preceding financial year would have been 0. Is 0 less than 1.5 CR? Yes, obviously 0 is less than 1.5 CR. So can you opt? Answer is yes. Second question. You have a place of business in Mumbai, plus you have a place of business in Manipur. What is the limit applicable to you? The permutations and combinations can be. Check it independently for Mumbai, check it independently for Manipur. Check it at a combined level and then come to a conclusion.
what do you feel? What does your common sense tell you? That do I have to check independently or do I have to check at a combined level? Independently. Independent. I'll keep this answer as pending. Reason being, I have still not discussed out the eligibilities with you all. However, that being said, remember your answer for yourself. So now let us understand the meaning of aggregate turnover. Remember this, the definition of aggregate turnover is the most important definition of the entire GST law, is what I tell you, because a lot depends on the definition of the aggregate turnover. When I say a lot, I mean that if I have to get registered under this act, firstly, I'll have to go and check whether my aggregate turnover has crossed that limit or it has not crossed that limit. So when my entry, my exit depends on this, the first and the foremost thing for me to understand is whether the aggregate turnover is crossed or I still have a buffer. Now, this being said, I personally feel that there are three most important definitions of this entire CGST Act. One is, what do you mean by goods? Because the aggregate turnover has to be of goods or services. Second, what do you mean by services? And third, what do you mean by the term aggregate turnover? We have understood what is goods. We have understood what is services. So now let us understand what is aggregate turnover. So the turnover, rather the definition, starts off with something like this. It asks me to check out the aggregate value of all taxable supplies. So when the definition itself gives me a hint, okay, hello Nihal, you need to count up your taxable supplies, which means there can be supplies which are not taxable, which are exempt as well. Taxable supplies covered. Second, exempt supplies. Third, exports. And fourth, interstate supplies to distinct persons. Now, why do I write interstate supplies to distinct persons? Acha, first of all, chalo, we'll come to one. First of all, what is covered? Taxable supplies. अब taxable supplies का meaning क्या होगा? Anything on which GST is payable is taxable. Supplies to me. Exempt supplies का meaning क्या होगा? Anything on which GST is payable but the government has exempted it. या मेरे को GST नहीं भरना, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला exempt है. थर्ड, एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स का मीनिंग एनीथिंग दैट इज गोइंग आउटसाइड द कंट्री, और जो भी अपन ने फर्स्ट क्लास में भी देखा था, द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल एज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट्स. बट हेलो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स बिकॉज I am talking about the concept of my turnover. And whenever I talk about turnover, it has to mean that something goes out from my side and not something that comes into me. Fourth, interstate supplies to distinct persons. Even that is your turnover. Let us understand it with the help of a profit and loss account. Supposedly, this is your P&L account.
इफ आई टेल यू अपनी सेल्स कैलकुलेट करो, भूल जाओ जीएसटी में हो, भूल जाओ कोई दूसरे एक्ट में हुआ, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं, calculate your sales and give me the amount of sales that you have made in the current year. What would you check? Will you check कि जीएसटी में टैक्सेबल है क्या? Will you check कि जीएसटी में एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं. आप क्या करोगे? सीधा अपना सेल्स अकाउंट ओपन करोगे. अब सेल्स अकाउंट जो है उसमें तो सारी की सारी चीजें होगी. हाँ, सिर्फ एक चीज नहीं होगी, ये आपको आपके सेल्स अकाउंट से नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको आपके ट्रांसफर्स के जो भी अकाउंट्स है, जो ट्रांसफर गुड्स का जो हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको वो वाले स्टेटमेंट से ये फिगर्स मिलेंगे. फ्रॉम एन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, ओके, आई एम outside the GST as of now. I am trying to discuss basic rules of accounting with you or basic accounting with you. मैं आता हूं और आपको पूछता हूं आपका टर्नओवर कितना है, तो आप टर्नओवर में मेरे को कौन सा फिगर दोगे? टोटल फिगर ही मिलेगा तेरे को. जो भी मेरे प्रोडक्ट्स बेचे हैं मैंने, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बेचे हैं, मैं तेरे को सबका एक फिगर ऐड करके मर्ज करके तेरे को दे दूंगा. सो जब आप वहां पर सारे के सारे फिगर्स मेरे को मर्ज करके दे रहे हो, तो यहाँ पर जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर में भी तो आपसे गवर्नमेंट वही मांगे, विथ एन एडिशन कि अगर आपने कोई अपनी इंटरस्टेट ट्रांसफर किया है टू योर ओन ब्रांच और टू योर ओन say to your own distinct person, even that gets covered. So I hope I am clear as till here about the meaning of aggregate term. Secondly, let us move ahead. What have they excluded? Excluded is supplies on which tax is paid under RCM basis. अब याद रखना, whenever you pay sub tax under RCM basis, we had understood what is the meaning of RCM. The recipient pays taxes to the government. So who are you? You are the recipient. So when you are paying tax to the government, is it your sales? No, it is not your sales. It is your purchases, and therefore that has been correctly excluded from the definition of aggregate term. It also excludes the CGST element, the SGST element, the UTGST element, the integrated tax element, as well as the compensation cess element, because ये सारे आपके सप्लाईज पे टैक्स लगे हैं. और अगर आपको अपना टर्नओवर चेक करना है तो आप कभी भी टैक्स को इंक्लूड नहीं कर. Am I clear as to what do I mean by the term aggregate turnover? Yes, sir. Now let us move down further. Let us now check the eligibility to opt under a composition scheme. First, you should not be a service provider. Okay, because क्या पता उनको सर्विस प्रोवाइडर से क्या दुश्मनी है. You should not be supplier of service. Okay, आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए. बट कौन सी सर्विस चलेगी? सिर्फ एक
that is your That's the restaurant की service. Second, he is not engaged in making supply of goods which are not leviable to tax. Now which means अगर आपका प्रोडक्ट शेड्यूल 3 वाला हो जाता है या अगर आपका प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगा तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जब अपन ने कंपोजिशन स्कीम का बेसिक स्टार्ट किया था, at that point of time we understood that you pay tax at a lower rate. Now assuming that your products are not taxable at all, anything that you pay is tax paid at a higher rate. So it goes against the basic principle or the basic logic of the scheme in itself. Third, he is not engaged in making interstate supply of goods. So ठीक है, आपने outside the state supplies पे मेरे restriction लगे. Fourth, you cannot make your sales via an e-commerce operator. Now the understanding or the logic behind it is, if you are registered on an e-commerce portal, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में विद इन द स्टेट का सप्लाई जाएगा? नॉट ट्रू. यू कैन गेट सप्लाईज विच आर विद इन द स्टेट. यू कैन ऑल्सो गेट सप्लाईज विच आर आउटसाइड द स्टेट. As a person registered on e-commerce operator, can you deny supplying? Answer is no. So therefore they say, because there is a probability open कि अगर आप e-commerce operator पे सप्लाई कर रहे हो तो आपको आउटसाइड द स्टेट भी सप्लाई करना पड़ेगा. therefore we have restricted it at the first level itself. Fifth, he is not a manufacturer of goods as may be notified by the government. So कुछ notified goods है, आप अगर उसमें डील करते हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता. अब कौन से गुड्स नोटिफाइड है? एक तो टोबैको नोटिफाइड है, एक आइसक्रीम नोटिफाइड है. ओके, अब आई डोंट नो वेदर आपकी नोट्स में ये चीज है कि नहीं है, बट आप चाहिए तो बाजू में कहीं पर लिख लो दैट टोबैको, और अगर आप आइसक्रीम में डील कर रहे हो तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. Now you would get the answer to your case study 2, which was you have a place of business in Mumbai plus you have a place of business in Manipur. Nihal, independent or Mumbai? The answer to that is provided where one registered person are having the same permanent account number, that is PAN, the registered person shall not be eligible to opt for this scheme unless all such registered person opt for this scheme. And therefore I conclude that this limit cannot be applied in independence, it has to be applied in totality. And therefore the answer that I'll have to apply this as independent is wrong. It has to be applied in a combined manner. I hope. Sir, I have a confusion. You can see this point C, right? It is saying that if it is engaged in interstate outward supplies of goods. Correct. So still Mumbai and Manipur will be eligible. Now understand one thing over here, that Mumbai and Manipur's case study, okay, and this point number C, no, they are not related to each other. Firstly, secondly, it tells me that अगर आपका कोई प्रोडक्ट कोई यूनिट मुंबई में है और एक और यूनिट मणिपुर में है, तो मुंबई वाला यूनिट कैन नॉट सप्लाई टू मणिपुर वाला यूनिट.
इट नोवेयर रेस्ट्रिक्ट्स यू कि आपका एक यूनिट मुंबई में नहीं हो सकता और सेकंड यूनिट मणिपुर में नहीं हो सकता. Okay, got it, sir. Got I hope I am clear. it. Yes, yes, sir. जो चीज का स्टार्ट होता है वो चीज का क्या होता है? End. End होता है. So you'll also need to understand when will this scheme lapse. The option available will lapse with effect from the day on which obviously your aggregate turnover has crossed up that limit. No rocket science in it. Then I believe 10.4 is already discussed that you cannot collect taxes. आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा as to 1% rate or the 5%. What if a person not eligible under composition scheme makes payment according to such scheme? Now this is a scenario wherein Nihal is not eligible to opt for composition scheme. However, Nihal has opted for this scheme and he has not paid or rather not followed the provisions of section 10. अब अगर आप लॉ फॉलो नहीं करोगे तो क्या होएगा? फॉरगेट अबाउट सेक्शन 10. मैं तो जनरली पूछता हूँ, अगर लॉ फॉलो नहीं किया तो क्या होएगा? You have to pay extra fees plus penalty. करेक्ट. द वेरी कॉमन आंसर इज निहाल, अगर लॉ फॉलो नहीं करते हो तो क्या आएगा? आपको ऑफिसर से एक नोटिस आएगा. नोटिस में आपको पूछेंगे कि तू मेरे को बात बता, व्हाई शुड आई नॉट कलेक्ट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम यू. सेम टू सेम प्रोविजंस यहां पर भी है. अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो और अगर आपने फिर भी वो स्कीम ऑप्ट की है, वो आपको एक नोटिस इश्यू करेंगे. नोटिस में बोलेंगे अच्छा नाउ टेल मी व्हाई शुड वी नॉट go ahead and collect those amounts from you. जो go ahead and collect those amounts from you है वो दो sections के अंदर हो सकते हैं, 73 और 74. रुको देखेंगे as and when the time. But however 73 और 74 में आपको एक नोटिस आएगा, प्लस गलत करोगे तो टैक्स भी भरना पड़ेगा एडिशनल और पेनल्टी भी एडिशनल पे करनी ही पड़ेगी आपको. थिंग इज इफ यू हैव decided that I am trying to go up against the law and do something, always be ready to pay a penalty for that. Now that penalty can be in form of tax payment or the penalty can also be in form of denial of your input tax credit or the officer feels आपने प्रोविजन नहीं मारा, ले मैं अपने तरफ से एक आपको पेनल्टी लगाता हूँ for not following the provisions of the law. Now whether a specific penalty for this is there or is not there, we would again see whenever we see the penalty provisions that would start from section 122 as and when the time comes. But till here I hope I am very much clear to you. Yes, sir. So now they have given out an analysis for you, which I believe we have already discussed. Now there is something else to know as well. इन्होंने ऊपर लिखा that if you are a person who is not in restaurant service, you cannot opt for composition scheme. But ये एक सिनेरियो को बहुत बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था. Now what that scenario was, say for example you are a manufacturer. You are a manufacturer. आपका goods, what is your major item? Goods. But a lot of people also used to come to you and say, निहाल भाई काम करो ना, आपका प्रोडक्ट है ना, आप इसको इंस्टॉल भी करके.
निहाल से इंस्टॉलेशन का चार्ज अलग से लूंगा। दे लाइक निहाल भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी, यस, आई एम अंडर कंपोजिशन ले, ऊपर पड़ा के if you are under composition levy you cannot provide any sort of service, therefore what was the implication on me? I used to get thrown out of this scheme. So the industry approached the government and said understand major goods जब जाता है तो उसके साथ हमको इंस्टॉलेशन की सर्विस भी देनी पड़ती। सो अगर आपने हमारा इंस्टॉलेशन का सर्विस बंद करवा दिया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एटलीस्ट गिव आउट अ लिमिट टू अस दैट चलो ठीक है आप पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन नहीं दे सकते, या यू कैन नॉट गिव आउट एन इंस्टॉलेशन ऑफ से 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, कुछ तो लिमिट दो हमको। क्यों? क्योंकि आप खुद ही बोलते हो दैट यू आर अ स्मॉल टैक्स पेयर और मेरी टर्नओवर की मैक्सिमम कैपिंग ही 1.5 करोड़ है। सो एटलीस्ट गिव मी अ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड तो दे दो। सो द गवर्नमेंट थॉट यार the point is it is logical, so let us give them a threshold. What that threshold is, however, I am reading this point, okay, this point. However, the supplier of goods shall be allowed to make supply of service not exceeding 10% of their turnover or rupees 5 lakh, whichever is higher. So even if you are a manufacturer, even if you are a trader, and if you arrange for transportation, you are still eligible to stay under this scheme subject to this limit. I hope I am absolutely clear till here. Yes, sir. Other than that, only person who are dealing in goods are allowed to stay. Now, as I have said, that you cannot collect taxes from your recipient. And when you cannot collect taxes from your recipient, you cannot issue a tax invoice. So what do you have to issue? Because आपको कुछ ना कुछ करके substantiate तो करना पड़ेगा that yes, I have sold him the goods. So you need to issue a document called as bill of supply. We would see as to how different it is from a tax invoice at the topic of invoicing. This I have already done. Now, before we jump on to the rules, there is something which is again missing in your notes. So I am opening up the bare act for you. चलिए, अब क्या हुआ ना, मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटी बताने के बाद में I will ask you whether it was correct or it was not correct. Once you tell me whether it was correct or it was not correct, we would discuss certain provisions further.
आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स हो और मैं एक सप्लायर ऑफ सर्विस। मैं बोलता हूं कि यार आपने गुड्स वालों को लिए तो सारे प्रोविजंस करके रख दिए, मैंने आपका कुछ बिगाड़ दिया था क्या? मैंने आपको टैक्स कम दिया? नहीं। मैंने आपको ये बोला कि आई विल नॉट पे यू टैक्सेस? नहीं। आपको क्या लगता है दैट इन अ सर्विस इंडस्ट्री एवरीबॉडी इज हैप्पीली विलिंगली पेइंग टैक्सेस? यू टेल मी नो. So then why we should not be provided with a scheme that is like a composition scheme? This question was raised by the entire service sector. Now tell me, should they be provided with a scheme similar to that, or they should not be provided and they should be told nahi aap pura ka pura compliance karo? What do you feel is correct? क्या उनको जबरदस्ती से पूरा कंप्लायंस करवाना सही है या उनके लिए भी एक ऑप्शनल स्कीम होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए. Option C. And therefore the government came out with a scheme for them as well. So याद रखना, जितने भी लोग अभी तक अपने को लग रहा था they are all ineligible, now they have been given a scheme which says if you are a service provider, aggregate turnover in the preceding year should not exceed 50 lakh rupees and you may pay tax at the rate of 3%. अगर इधर है तो टोटल परसेंट कितना होएगा? 6. तो 6% वाली स्कीम उनके लिए निकाली, इनके लिए जिनको आपने अभी तक एक्सक्लूड करके रखा। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि जिनको आपने अब तक एक्सक्लूड करके रखा था? सेक्शन बोलता है यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर ऑल सच थिंग्स। दैट इज अगर आप ए बी सी डी ई ऑप्ट नहीं कर सकते तो आप ये स्कीम में ऑप्ट कर लीजिए। ए में क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल, ठीक है। बी में क्या लिखा है? इज नॉट, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, आई मेड अ ब्लंडर, आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहे हो, अगर आप अदर गुड्स में डील नहीं कर रहे हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द 6% रेट। ओके, एंड फिर इन्होंने बोला कि अगर आपने 6% रेट ऑप्ट भी कर ली है, फिर भी आपको जो भी ऊपर हमने जो भी अब तक हम लोगों ने जो रेस्ट्रिक्शंस देखे थे, दैट यू शुड नॉट बी इन अ स्कीम इन विच देयर इज नो टैक्स पेएबल, आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं कर सकते, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप एक मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं हो सकते जिसको हमने नोटिफाई किया है, एंड सेकेंडली या रादर लास्टली आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या आप एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो सकते। अब एक बात समझना, ऊपर या जो स्कीम अपन ने अब तक देखी थी, यहां पर उनका स्पेशल फोकस 3 लोगों की तरफ था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। यहां पर उन्होंने एक सर्विस सेक्टर को टारगेट करते हुए एक स्कीम बनाई और एक और कंडीशन क्या डाल दी कि आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो सकते। I hope I am clear, and there is also a suggestion for you that the notes from which I am taking it as a base and conducting this or rather recording this video lectures,
they are not yet complete. So we would be reading the bare act as well as your notes simultaneously. Okay. Am I clear? Yes, sir. No. Go back to your notes and see. Now let us understand what are the rules for the composition scheme. Acha. Now before jumping on to the rules, you first need to understand. Acha, chalo, tell me, what is the difference between act and a rule? What is the difference between an act and a rule? Okay. Act is actually which is passed in Parliament In when a rules? bill is presented in the Parliament, and it is okay. And the rules, they come through amendment. Okay. Remember, act is the conceptual framework and the rules are its implementation. निहाल एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर को बताना पड़ेगा कि उसने कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है. ये लिखा है मेरे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्ट में. निहाल को रूल 3 में ये बताना पड़ेगा कि निहाल कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करेगा एट द टाइम ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन. जब वो अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर रहा है उस टाइम पर निहाल एक ऑप्शन है, वहां पे टिक करेगा कि यस आई एम ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन. कंसेप्ट आपने बना लिया कि आपको हमको बताना पड़ेगा. अब आप कैसे बताओगे ये सारी की सारी चीजें हम रूल्स में समझेंगे. मैं क्लियर as to what is the difference between an act and a rule? Yes. Intimation to opt for composition scheme or rather levy is in rule is specified in rule 3. Person who has been granted registration on a provisional basis may file an intimation electronically. कौन से फॉर्म पर भरेगा वो? फॉर्म GST CMP 01 that I want to pay tax under composition levy. अब वो कब भरेगा? Prior to the appointed date but not later than 30 days after the set date. Now remember, we are in the year 2022. The appointed date was 1st of July 2017. So ये एक पार्ट ऑफ आपका ट्रांजिशनल रूल भी कहा जा सकता है कि अगर आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे और आपको अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी में आपको कंपोजिशन स्कीम में रहना है, तो आपको हमको इंटीमेट करना था. अगेन ट्रांजिशनल प्रोविजन है, बट यस इट कैन बी इग्नोर्ड एज वेल बिकॉज अपन 22 में है एंड अपॉइंटेड डेट के बाद पहले का चीज ऑलरेडी जा चुका. Second, any person who applies for registration in sub rule 1 may give an option कि भाई आपका एक फॉर्म REG 01 होएगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है. अभी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, टिक कर देना. अच्छा, छोड़ दो थियरी, छोड़ दो. अगर आपने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी किया है तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप पोर्टल पर जाते हो एंड जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम. इफ यू क्लिक इट, इट enables itself and it is a yes. So वो जो yes होता है वो टेक्निकली बैकग्राउंड में यहां से. थर्ड, रूल 3 rather, intimation to opt for composition levy before commencement of financial year.
आपको एक ऑप्शन दिया है, से फॉर एग्जांपल यू आर इन financial year 2021-22, वो बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अगर आप चाहो तो जब 21-22 एंड हो रहा हो ना, तभी आप हमको इंटीमेट कर देना कि हम कंपोजिशन स्कीम में रहने वाले हैं या हम कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने वाले हैं, और ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 01/04/22, विच मीन्स अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, साल शुरू होने का इंतजार मत कीजिए, साल शुरू होने के पहले ही आप हमको बता दीजिए कि भाई हम 22-23 में ना कंपोजिशन स्कीम में रहने वाले हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। हाँ, ऑब्वियसली इसके जो भी आईटीसी इम्प्लीकेशंस होंगे वो अपन सब देखेंगे इन द टॉपिक ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल नाउ बाय सेइंग दिस कि आपका जो भी स्टॉक इन ट्रेड होगा उसका आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। So let us not get into the ITC elements as of now in totality. Next, as a business facilitation measure, a person who has been granted registration or provision under Rule 14 or registration certificate has been granted may opt to pay for tax under Section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in form GST CMP 02, which means अगर आपने CST CMP 02 भरा है तो आपको फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने अप्रैल महीने में GST CMP 02 भरा तो आपको मई महीने से अप्रैल मंथ में भरा तो आपको मई महीने से कंपोजिशन स्कीम में वो लोग एंट्री दे देंगे। नाउ अगेन दिस बीइंग सेड, you can be subject to checking, you can be subject to queries, you can be subject to documentation requirements. Furnish details of stock, ये अपन अपने कंपोजिशन स्कीम के टाइम पे देखेंगे, कंपोजिशन स्कीम क्या आईटीसी के टाइम पे देखेंगे। एंड बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट if I opt for composition scheme at one state or at one place, I will also have to opt for composition scheme for all the other places. And therefore, if I have multiple registrations, one intimation is sufficient. One intimation is deemed to be intimation for all other places as well. I hope I am clear. Now, come on, tell me, simply apply your common sense. What will be the effective date of composition scheme? यहां पर अपन ने क्या समझा? आपने एप्लीकेशन कब की? फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। आपका इफेक्टिव डेट क्या आया? 1st of April 2022. So then what is your effective date? First day of the financial year, that is the beginning of the financial year. दूसरी इफेक्टिव डेट क्या हो सकती है? दूसरी इफेक्टिव डेट क्या हो सकती है बताओ? जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, अगर आपने फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? द डेट ऑन विच योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड. So if I have to bifurcate, if I have to split it off, I can say that you can opt for composition scheme if you are a existing taxpayer. At the same time, you can also opt for composition scheme if you are a new taxpayer. अगर existing taxpayer हो और आप ऑप्ट कर रहे हो तो याद रखना बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से स्कीम चालू हो जाएगी, और अगर आप न्यू टैक्स पेयर हो
तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया उस दिन से आपकी स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। Conditions and restrictions, I believe we have already covered them all. Only two things are not yet covered, and they are point number 6 and point number 7. आप जो भी मुझे बिल ऑफ सप्लाई दोगे या जो भी आप एक डॉक्यूमेंट इशू करोगे मुझे टू satisfy that yes I have issued you an something document, आपको उस पे लिखना पड़ेगा that I am a composition taxable person not eligible to collect taxes on my savings. Second, आपका जो भी साइन बोर्ड होगा, ओके, साइन बोर्ड जो भी आपका होगा आपको उस पे भी लिखना पड़ेगा that I am a composition taxable person. Now what is the difference between a prominent place and a place? Because here they have asked you to display it at a prominent place of business, at his principal place, and at every additional place of business. So what do you understand by the term prominent place? No guesses? Prominent place is a place which is visible easily. So when I say that something has to be displayed prominently, it means that I should not be forced to make up an effort कि इसको ढूंढना पड़ेगा. नहीं, घुसा अंदर दिख गया. That is how, or rather that is what is the meaning of prominent place. एक और क्वेश्चन आता है, Nihal, do I have to file up the registration every time or will I have to intimate the government every year? हर साल क्या करोगे बता के? अगर कोई साल में ऑप्ट आउट करना है तो मेरे को बता देना that you are opting out, और उसके बाद में अगर री ऑप्ट इन करना है तो मेरे को बताना that you have to opt in again. हर साल बताने की जरूरत नहीं है. अच्छा, स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? सो गए क्या? सो गए क्या? No sir, unless it satisfies all the conditions. That is what is written, but what does that mean? Means once you are falling under that provision, then till then you are in the scheme. Once you have changed your route, it is you are out of the scheme. Absolutely. So what it means is आपने जितनी भी conditions मैंने अब तक डिस्कस की है, आपको सारी की सारी जब तक मानोगे ना तब तक आपको स्कीम में रहना अलाउड है. जैसे बाहर जाते हो, एक भी अगर कंडीशन वायोलेट कर दी तो अभी आपको स्कीम में रहना अलाउड नहीं है. ऑब्वियसली बात है, अगर आप स्कीम में नहीं हो तो आपको टैक्स कौन से रेट से भरना पड़ेगा? नॉर्मल रेट से भरना पड़ेगा. और आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई अब हम स्कीम में नहीं रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, आपको गवर्नमेंट को बताना भी पड़ेगा कि यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द स्कीम. अब जीएसटी जीएमपी फॉर्म नंबर्स है तो ठीक है. आपको गवर्नमेंट को कब बताना पड़ेगा? 7 दिन के अंदर. कब बताना पड़ेगा? Within 7 days of the occurrence of such event, you need to inform to the government that hello, I am no longer eligible to stay under this scheme. Please make the necessary changes. अब ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. Issuance of show cause notice for contravention of provision. Now that is, again I am telling it to you, forget about section 10. I am telling you in GST as a whole, अगर प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो आपको शो कॉज आने ही वाला है. बट अगर आप स्पेसिफिकली कंपोजिशन स्कीम की बात करते हो
तो आपको शो कॉज आएगा अंडर रूल 6(4). अब शो कॉज आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? reply to the show cause notice. रिप्लाई करना पड़ेगा शो कॉज को, और तो क्या करोगे? अब रिप्लाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि they'll give you a forever. You have to reply within 30 days of the receipt of such correct. You have to reply within the specified time limit as specified in the show cause. Now याद रखना, there cannot be a time limit pushed or rather put on आपको शो कॉज का रिप्लाई कितने दिन में करना. क्यों? Because it is specifically mentioned in the show cause itself के आपको 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है, आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना है, आपको 25 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा, या आपको एक स्पेसिफिक डेट के पहले रिप्लाई करना. बट द मोमेंट यू हैव फाइल्ड अप योर रिप्लाई, then the officer has the information, and once the officer has the information, he or she is supposed to close the proceedings within 30 days of receipt of such reply. What can the officer do? He can either accept or he can reject. उससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. और the third thing is he can call for additional information. But additional information भी अगर उसने मंगाई तो भी उसको लास्ट में या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या एप्लीकेशन रिजेक्ट. Again, I am not touching anything about ITC related things, so stocking details I am ignoring for now. एक जगह से आपको बाहर फेंक दिया, बाकी सब प्लेसेस में you are considered in or you are thrown out. Means if you are not in this composite scheme, you have to go for other scheme. Right? No, that is not the way. Say for example, you are permitted to stay under composition scheme. However, based upon your replies, based upon what the assessing officer felt, you were thrown out of the scheme for say Mumbai. So can you stay under composition scheme in Manipur? No. No, because either you follow it in totality or you do not follow it at all. अब अपना rules 7, that is what was specifying the rate of taxes, we have already seen. Now this is a list of forms that is there. So chalo, solve this question for me right now. A Limited is a manufacturing concern in Pune. In financial year 18-19, total values of supply, including reverse charges, were 102,60,000. That is 1,02,60,000. The breakup of which is as under: intrastate supplies made under forward charge, intrastate supplies on which GST was payable at nil rate is certain amount. 3. Intrastate supplies which are wholly exempt under section 11 of the CGST Act is 50 lakhs, and value of supplies, value of inward supplies on which tax is payable under RCM is 2,60,000. Explain. Are you eligible to opt for composition scheme or you are not eligible to opt for composition scheme? Eligible actually. What? Eligible. Eligible. Now, how did you derive to that conclusion? I derived because interstate supplies under forward charges 25 lakhs is only eligible. Other 3 are not eligible because one is on nil rate, so that is out of this purview, and one is exempted under section 11 of CGST, so that is out of this purview. And the third one, it is inward where RCM, you are already paying RCM for this, so that's why even that has to be removed. Okay, now let us understand what, or rather how they have derived to this conclusion. They say, what is the basic scheme, or rather how is the basic limit to derive whether you are eligible or you are not eligible? You need to check your aggregate turnover.
So if you are needing to check your aggregate turnover, that has to be less than 1.5 CR. Correct? Yes. What is the aggregate turnover? The definition of it is सारी टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज को आप मर्ज कर दीजिए. मर्ज करने के बाद में देखिए कि टर्नओवर कितना आ रहा है. टर्नओवर कितना आ रहा है आपका 1 CR. कैसे? 25 lakhs plus 25 lakhs plus 50 lakhs. So that is 1 CR. Now wait. You are a मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अपन ने जो रेट देखी थी दैट वाज 1% ऑफ टोटल टर्नओवर. सो बच्चा, जब आप टोटल टर्नओवर की बात करते हो तो यू इंप्लाई, यू से इट दैट इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आपको आपकी टैक्सेबल टर्नओवर पे भी टैक्स देना है, आपको आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे भी टैक्स देना है, एंड आपको आपकी नील रेटेड सप्लाईज पे भी टैक्स देना है. नाउ रिमेंबर, I have not thought anything incorrect. I still am on my stand that yes, if the rate of tax is lower than what you are paying, you are not required to come under this scheme, but this provision, it applies only if the tax itself is chargeable on taxable supplies, which makes me conclude that if you are a manufacturer, आपको exempt supplies भी है, उस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर आप अदर्स कैटेगरी में फॉल करते हो तो ही आपके लिए ऊपर की जो भी डिस्कशंस अपन ने किए थे वो एप्लीकेबल रहते हैं. एनी कंफ्यूजन? Any confusion till now? No. I hope I am very clear about when it is applicable and how it is applicable. Achha, new scheme we have already discussed it in total in first only. Procedures and all are also discussed. Chalo. Now, till here, whatever we had discussed was talking about composition scheme. Now, give me a minute. I would be coming back and then we would be starting off with a small topic, or rather a small introduction of exemptions. Now, please note, I would only be discussing the conceptual framework of an exemption today, and or rather a few of the exemption notifications as well today, and the remaining part of it would be getting covered in the videos to come. Just give me a couple of minutes so that I would come back. Power to grant exemption. Before starting it off, let me first give you a brief about it. अब देखो एक बात, Government of India came out with goods and services tax. उसमें इन लोगों ने स्कोप डिफाइन किया. Larger the scope, larger the items covered, larger the tax revenue, larger the tax base. But
everything and anything on this planet cannot be subject to tax. Therefore, and as I always say, India is an emotional country. So when India is an emotional country, keeping the sentiments of the people at priority, they had to exempt certain products. Now remember, they have given you an exemption. Now, what is the difference between exemption and non-taxable? Non-taxable, from my view, is GST itself is not applicable. जैसे मनी हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, मेरी शेड्यूल 3 की सप्लाईज हो, अल्कोहल हो गया, लिकर हो गया, और अल्कोहल लिकर तो एक होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, they are all non-taxable items. Now, what are exemptions? Exemptions mean that the item or the service is taxable, but the government has decided, or rather given it a status of zero tax payable. What do I mean to tell, or rather what do I mean to say? Exemption हो या नॉन टैक्सेबल आइटम्स हो, लास्ट में टैक्स जीरो ही पेबल है, बट एग्जेम्पशन के जो भी सर्विसेज है, जो भी गुड्स है, दे आर ऑल सप्लाईज, दे आर ऑल टैक्सेबल, बट फिर भी गवर्नमेंट बोलती है वी हैव सर्टेन थिंग्स इन आवर माइंड. नाउ ओविंग टू दो सर्टेन थिंग्स इन आवर माइंड, वी हैव decided that we would not collect taxes over it and we would not charge taxes over the same. So common sense tells me that it is easier to give out an exemption, to pull out an exemption, and it is difficult to give out, or rather to pull out any non-taxable item from the scope of GST. Also, all the exemptions, they come from notifications, and all the non-taxable items are a part of my act. Even the schedules are a part of my act. Therefore, अगर exemption को withdraw करना है, मेरे को सिर्फ एक notification issue करनी है that from particular date the following exemptions are not applicable. But if I have to go out and pull out petrol, diesel, and get that into my GST regime, I will have to amend the CGST Act. And we all understand and appreciate that it is difficult to amend an act, but it is easier to amend a notification. So I hope the exemption is the meaning of the term exemption at least is very clear. Now, निहाल कौन सी आइटम्स ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ने है तो टैक्सेबल बट एग्जेम्प्ट कर रखा? मैं आपको आइटम्स तो नहीं दे सकता बिकॉज बहुत सारी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दूंगा कि अगर आपका ये पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो मोस्टली चीज एग्जेम्प्ट है. Conceptual framework number 1. It affects public at large. अब एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज होगी जो पब्लिक को एट लार्ज अफेक्ट करेगी?
इफ यू कैन थिंक। निहाल भाई, म्यूनसिपालिटी की फंक्शंस होने दो, बर्थ सर्टिफिकेट होने दो, डेथ सर्टिफिकेट होने दो, अपन जो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं उसकी फाइन्स पेनल्टीज वगैरह होने दो, आपका जो ब्लड टेस्टिंग होता है उसकी सर्विस होने दो। इस पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करती है ना, बिकॉज अगर आपकी तबीयत खराब है तो चाहे आप गरीब हो या चाहे आप अमीर हो, आपको ब्लड टेस्टिंग तो करवानी पड़ेगी। सेकंड, मेरा जो सप्लायर है ना, इट कैन बी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सप्लाईज है वो सारी एग्जेम्प्टेड है। थर्ड, if you are into donations or donation related services, जैसे प्रमोटिंग योगा, नहीं चलो प्रमोटिंग योगा तो बाद में लेते हैं, जैसे किसी की शादी करना, मैरिज, एंड यू नो मंदिर के बाहर वो जो शॉप्स वगैरह रहते हैं, से टेम्पल रिलेटेड थिंग। फोर्थ, योगा और अम्यूजमेंट पार्क्स, एक्सेट्रा। फिफ्थ, ये सारी चीजें का मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, हाँ, डोंट कंक्लूड के इतनी सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है, नहीं नहीं नहीं, आई एम ओनली गिविंग यू अ ब्रॉड ओवरव्यू so that even if you don't remember the item exactly, you can still apply a conceptual framework के यार पब्लिक एट लार्ज इम्पैक्ट हो रही है क्या, हाँ तो शायद एग्जाम हो सकता है। दिस इज a tool only to be used if you do not have any idea absolutely about what the item is talking. याद रखना इज इम्पोर्टेंट, याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है एग्जामिशंस की चीजें। बट अगर नहीं याद रहता, अगर आप भूल चुके हो तो क्या करोगे, तो एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क तो बना के रखो दिमाग में क्या हो सकता। फिर आपके कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस, देखो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एज अ पर्सन I find it very difficult to remember things, and therefore what I do is I try to develop a concept, and once that concept is clear in my head, remembering the things is not a challenge. क्यों? क्योंकि कोई मेरे को अगर पूछता है कि निहाल मुझे योगा करवाना है, आई एम ओपनिंग अप अ योगा सेंटर, जीएसटी लगेगा क्या? मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि कौन सी लाइन आइटम से वो एग्जेम्प्ट हो रहा है। मेरे दिमाग में पहली सिर्फ एक ही चीज आती है, योगा है related to health, yes, but who is doing it? You are a private independent entity, शायद ही मिलेगा तेरे को एग्जेम्पशन, शायद जीएसटी भरना पड़ेगा। अब वो शायद से ही गेट्स आल्सो गेट्स अ थिंग के लेट मी आल्सो रिवर्ट, देन आई आल्सो गेट इट के यार मुझे भी वापस एक बार बोलते ना जरा सा कंफर्म होना पड़ेगा क्या कि ये डोनेशन वाली एंटिटी करेगी तो ही एग्जेम्प्ट है, या ये कोई भी पब्लिक अगर शुरू की तो एग्जेम्पशन। अब याद रखना एग्जेम्पशन इज वेरी स्पेसिफिक, एंड अपने को मालूम है लॉ में एक चीज होती है प्रूफ ऑफ बर्डन। किसको प्रूफ करना पड़ेगा? द पर्सन who is taking that exemption, claiming that exemption. The person claiming it, he has to prove कि boss my entry or rather my supply is exempt. Now this is a very brief conceptual framework about exemptions. I hope I am crystal clear about it.
Yes. पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन। अच्छा, अब देखो और चीजें होती है इधर। गवर्नमेंट बोलती है दैट निहाल द एग्जाम्पशन कैन बी गिवन इन टू वेज, आइदर इट इज अ जनरल और इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब मेरे को एक बात बताओ, जो जनरल एग्जाम्पशन आपको दिया है, डू यू हैव अ चॉइस टू फॉलो इट और डू यू हैव टू कंपल्सरीली फॉलो इट? Compulsory follow it. So this is compulsory. And whenever you get a subject to condition something, it obviously means अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, अगर आप वो चीजें फुलफिल करते हो तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं। सो दिस इज ऑप्शनल। इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. जनरल एग्जाम्पशन स्पेसिफिकली ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम अ डेट एज मे बी नोटिफाइड, ये भी ठीक है। अब यार आपकी जब सर्विस एग्जेम्प्टेड है, कैन यू कलेक्ट टैक्सेस? नो। कैन यू लेवी टैक्सेस? नो। देन even but that is also been specified कि आप नहीं कर सकते। सेकेंडली, एक्सेप्शनल नेचर अगर है, now if you read this thing very specific, what are they trying to tell it to you? That we would be granting an exemption only if it is in public interest. So when I say it is in public interest, I mean it affects the public at large. And when it something affects public at large, it is also the responsibility of the government to give out a specific benefit to the taxpayers. So I hope I am very much clear about it. अब Yes, sir. you know, जब भी कुछ exemption आती है, वो अपने साथ साथ में confusion भी लाती है। अब अगर कुछ चीज का confusion है तो आपको क्या insert करना पड़ेगा? Explanation. Explanation आप कब तक insert कर सकते हो? Forever to go? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप जिंदगी भर के लिए वो अपने पास स्कोप ओपन रख लोगे, तो याद रखना एक्सप्लेनेशन का मीनिंग होता है that it was always a part of the act, however it was not specified, so it has an impact of say amending things or rather changing the meaning retrospectively. And whenever anything has a part of, or rather when anything has a role that can give backlasting effect, कुछ तो आपको रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे। सो वो क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन कैन बी इशूड एट एनी टाइम बट विद इन 1 year ऑफ द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, व्हिच मींस अगर आज 12 जनवरी 2022 को कोई नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू होता है, तो आप एग्जेम्पशन या रेदर एक्सप्लेनेशन कितने टाइम तक डाल सकते हो? 1 साल के अंदर में। एंड एक्सप्लेनेशन का मीनिंग यही होता है दैट इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट, इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट। नाउ आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। Yes, sir. So चलो, let us start with our first exemption.
बट इसके लिए you will also have to do something. Acha, do one thing. Keep a track as to the numbers of the notification the serial number of the notifications which I am discussing with you, because I am not going in the same order. The reason for that is there are certain items which are defined lower, that is in part of explanation to this notification. However, it is not appearing on the screen right now, and therefore I am only discussing the entry numbers that are not having anything to do with this explanation today. I hope you would be keeping a track of the numbers of notifications which, or rather the number of serial numbers of which I am discussing. Exemption notification number कौन सी है? 12/2017. Obviously it has been amended from time to time. First entry that I am discussing with you all is supplies by way of a going concern, by way of transfer of a going concern as a whole or an independent part thereof. अब अगर आपको अपना schedule 2 का डिस्कशन याद है तो वहां पर अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी थी. When a person ceases to be a taxable person, it is treated as supply of goods. वहां पर अपन ने दो एक्सेप्शन पढ़े थे. What were they? Transfer as a going concern, and second, if the business is carried on by a legal representative. वहां पे आपने ये एस्टैब्लिश किया that it is not supply of goods. यहां से आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो that it is not supply of service, or rather even if it is treated as a supply of service, it is exempted. I hope I am clear that supplies by way of transfer of a going concern is neither taxable as goods nor taxable as service. Now this comes as a joint reading of your exemption notification 12 read with schedule 2 of your CGST Act. अब आपको मालूम ही होगा that कोई भी बिजनेस है, it can either be transferred in totality or it can also be transferred as an independent part. A small example of it is slump sale under the income tax act. वहां पर क्या होता है, आपने slump sale में क्या होता है, चलो slump sale बोल दिया तो वो डिस्कस करते हैं. आपने क्या किया, कुछ आपके स्पेसिफिक आइटम्स थे, उसको इंडिपेंडेंटली बेच दिया as a whole for a fixed price. Therefore, is that an independent transfer? Answer is yes. Covered by this notification? Fairly and squarely yes. Second, services provided by and to FIFA for conducting of World Cup 2017 to be hosted in India. अब भी आपको मालूम ही होगा कि 2017 का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था ऑफ फुटबॉल, वो इंडिया में हुआ था, एंड वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल इज कंडक्टेड बाय फीफा. So, अगर फीफा ने आपको कोई सर्विस दी है, अगर आपने फीफा को कोई सर्विस दी है, उसको भी इन्होंने एग्जेम्पशन में डाला था. Now please note, वो एग्जेम्प्ट तभी था if they were
directly or indirectly related to the event, plus they were also certified by the director sports of Ministry of Youth and Sports. So अगर एक भी चीज satisfy नहीं होती तो the exemption was not available. What do you mean by the term transit cargo? Cargo which takes goods from one country to another or one state to another. Absolutely. Maybe from one country to another. Absolutely. You know that we are locked by land with two loving countries and one not so loving country. Nepal and Bhutan, they are all landlocked countries, and therefore the most easiest way is to transport goods by land. Therefore the government says अगर आप नेपाल एंड भूटान को ट्रांजिट कार्गो की सर्विसेज दे रहे हो या अगर उससे रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हो तो इवन वी हैव exempted that. Due so that you know we can prosper in trade, our neighbors also prospers in their trades. Government services में एक साथ ही लूंगा. चलो, now let us come to kirana services. What is fair price shops? That government vendors, they sell the goods at lower prices than the market. Okay, absolutely. Subsidized. You know ये होता है कि if you are say below poverty line, you can go to that ration की दुकान which are obviously operated by the government and say that I want kerosene, I want sugar, I want edible oil, I want food grains. They give it to you at a lower or discounted price, and obviously they get a commission or margin from the central government in that respect. And once they get that, the commission is not subject to GST because that has been exempt. Entry number 12 is very simple. Anything supply by way of service of renting of residential dwelling for use as residence. आप घर किराए पे लेते हो मालूम है? सो वो जो घर आप किराए पे लेते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता. लाइफ इतनी सिंपल नहीं रखने का कभी भी हमेशा, तो चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं. रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर लिया है. रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में आपने कमर्शियल पर्पस के लिए घर लिया है. कमर्शियल प्रीमाइसेस में आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर लिया. कमर्शियल प्रीमाइसेस में आपने कमर्शियल पर्पस के लिए घर लिया. एग्जेम्पशन किसको है या रादर किसको मिलना चाहिए? खाली फर्स्ट वाले को, रेसिडेंशियल पर्पस. This all are subject to tax. So याद रखना, घर घर के लिए होता है, बाकी सब व्यापार के लिए होता है. और अगर आपने घर से व्यापार किया तो वो घर को भी हम बेनिफिट ऑफ जीएसटी नहीं देंगे. So I hope I am clear. Yes, sir. नेक्स्ट ये कर लेंगे. ठीक है चलो. सो आई बिलीव जो एकदम सिंपली ली जा सकती थी, दो सर्विसेज आर ओवर, and so we have only discussed the 5 services. They were very, I believe, simple, very manageable as of now, and I believe this is all that I had to say in this video. I would surely be coming back with a lot
of discussions on exemptions in my coming videos. Hope you enjoyed learning. Hope it was a value add to all of you. And thank you so much.